Good morning, students. In this video, you will learn about the functions in Excel. So this is the second chapter of your computer syllabus. So इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं द फंक्शन इन MS Excel कि कौन कौन से फंक्शंस हम लोग MS Excel के थ्रू यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. So in the second chapter, you will learn about the function in Excel. So now we will start. So in your previous class, you have learned to use of a worksheet and also write a simple formula. We can use MS Excel to execute formulas that add, subtract, multiply and divide like a calculator. So let us learn more about in this chapter about the MS Excel. So we start with the cell address and cell range. So what is the mean of cell range and what is the mean of cell address? So I think some of you already know about the what is the mean of cell address and cell range. So every cell has a unique address. When you select a multiple cell at the same time, it is known as a cell range. A cell range is written by giving the address of first cell and the last cell separated by the column. For example, a cell range which include cells A1, A2, A3 and A5 will be written as a A1 colon A5. So you have learned how to select a cell range in your previous class. So now I'll explain by this practical method. Okay, so what is the mean of cell address and the cell range? Okay, so here you can see the some section. Okay, the lines are horizontal and vertical. Okay, so by the intersection of the horizontal and these vertical line, so this is okay. So this is known as a cell. Okay, so you can see here. Okay, there are the multiple cell. Okay, so which is separated by these line. Okay, so these all are the we call it as a cell. Okay, now what is the mean of cell address? Okay, so cell address, what is the mean? So whenever we select a cell, okay, so whenever we select any cell, okay, so this is the bar which show the address of that particular cell. And what is the mean of cell address? So the name of that column and the name of the okay. So what is the mean of cell address and how you can get the cell address? Okay, by your own. So whenever you select a cell, okay, so there is a column and there is a row, okay, so which is highlighted. So the cell address is the combination of column name and the row number. Okay, so here you can see the cell address E4. Okay, so column is a E and the row number is 4. So E4 is the cell address of that particular cell. Okay, so whenever you select a any cell, you will get the cell address in this section. Okay, so here on the left top screen, okay, so here you can see I9 as a cell address. Okay, so this is how you can get a cell address. Okay, so what is the cell address? A combination of column name and the row number. Okay, so this cell address is F3. Okay, and one more thing is here. Uh, so whenever we select a cell, okay, so it is also known as a active cell. Okay, so I think in previous class you are known about this. What is the mean of active cell? So whenever we select a particular cell, it is known as a active cell. Okay, so whenever these highlighted cell, okay, so you can see the multiple cells are here. Okay, so but when we click on that particular cell, so it is highlighted by the thick black line. Okay, so this is the active cell. Okay, so ये आपके चैप्टर में अभी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, ये बेसिक नॉलेज है अबाउट द सेल.
सो दिस इज नोन एज एक्टिव सेल, ओके, तो जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं या जिसमें हम लोग कोई भी चीज एंटर कर सकते हैं, ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर. सो एक्टिव सेल, highlighted cell in which you can enter the data, it is known as an active cell. Okay, so now back to the our topic. So cell address हमने देखा. Now we will talk about the cell range. What is the mean of cell range? Okay, so whenever we select two or multiple cell, so how we can select? We just need to click on that particular cell. Okay, then again press the click button, and without releasing click button, we can select or drag this like this. Okay, so this is the cell range. It is known as a cell range. Okay, ये होता है आपका सेल रेंज whenever we select a particular group of cells. Okay, so यहाँ से ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग सेल रेंज. ओके, ये सेल रेंज होता है. ओके, सो C3 से लेके हम लोगों ने कहाँ तक लिया, ये G and G10 तक. ओके, सो दिस इज द सेल रेंज फ्रॉम द C3 टू G10. ओके, सो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं सेपरेटेड बाय द कॉलन. तो कहाँ से कहाँ था, C3, then need to press the colon. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, C3 सेपरेटेड बाय कॉलन एंड लास्ट कॉलम का नाम था G10. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन define the cell range. So I think now you are all learn about the cell range. Okay, so next let us look at some more example about the. Okay, so now here we have D5. So what does it mean? So column name is D and the row number is 5. Okay, so D is 5 is a cell address and the name of the particular cell. B1 to B5, the cell column B and the row 1 to 5. So it is a known as a cell range. Okay, so B1 to G1, so the cell in the row 1 and the column B to G. Okay, and the A1 to C4, so the cells from the column A to C and the row 1 to 4 in the from the rectangles. Okay, so this is how you can get this one. Okay, so ये तरीका है आपका. Okay, so this is how. Okay, so C3 से लेके हम लोगों ने किसको select किया, F9 तक. Okay, so this is how you can select these type of address. Okay, now from B to B. Okay, so all cells in the entire column. Okay, so this is how you can select. This is okay, ये आपका कॉलम हो गया B और ये आ गया होगा B to B. Okay, so this is how you can select entire column of the column B. How you can select? Just click, drag your mouse pointer on that particular column. Okay, और whenever this arrow, okay, so ये जो आपका कर्सर है, जब भी आप लोग इस पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्रॉप डाउन एरो में. Here you can see the drop down arrow and you just need to click on that particular column name. Okay, so entire column will be selected. Okay, so this is how you can select entire column. Okay, so now A to D, so the cell under the column A to D and the 3 to 3, so cell belonging the entire row of 3. Okay, so how you can select entire row? Now I'll explain to you that how you can select. So this is how you can select the part of row. But if you want to select entire row, जो आपको कहाँ से कहाँ तक पूरी रो को अगर आपको select करना है, तो कैसे करोगे आप लोग? जैसे आप लोग कॉलम को लेके जा रहे थे, ठीक है, सो कॉलम पे क्या हो रहा था, ड्रॉप डाउन एरो हो रहा था, वैसे ही आप लोग रो हेडिंग पे जाएंगे यहाँ पे, और जो भी आपको रो हेडिंग पे आपको सेलेक्ट करना है, आप जैसे सपोज करो 4 रो को सेलेक्ट करना है, तो ये जो कर्सर है आपका, ये आपका राइट साइड के एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सी, जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो यू कैन सेलेक्ट एंटायर रो. ओके, सो ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे एंटायर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ we will see the next part of this chapter. Okay, the 3 to 3 and 2 to 5 are the all cell belonging from the row 2 to the row 5. Okay, so multiple row को कैसे select करना है, just click किया,
और इसको सेलेक्ट ऐसे ड्रैग करके लेके आ गए और क्लिक को रिलीज कर दिया, ओके, बटन को रिलीज कर दिया. सो विदाउट रिलीजिंग द क्लिक बटन, क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर 4 and drag downward, or you can select upward, okay, and then you can release your button, okay. So this is how you can select from row 2 to 4 or any which you want to select, okay. So now we will see the next part of this chapter using formula. So I think some of you are known about this formula. So again I am explaining how you can use the formula, okay, with the basic knowledge, okay. So now we will read this chapter first, okay. So a formula is an equation that perform a calculation and has a special format. You have already learned that so in Excel, a formula always start with equal sign followed by the some other element. Okay. So whenever you use or you want to use the formula, you have to put the first equal sign and the other element. Okay. So I'll explain just next. Okay. The value and the text used in the formula are located in other cell. So when you change the data of the formula still work. So this make changing the data easy and make worksheet dynamic in nature. Okay, so let us how to write a formula. Okay, so I'll explain you by this practical method. Okay, that how you can use the formula, but here you have some steps. Okay, so how do you can use the first step, select particular cell. Okay, so ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं. मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि हम लोग कैसे सेलेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. ओके, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस एग्जांपल. ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग विद माय एग्जांपल. Okay, so how you can use the formula. Okay, to practice the applying formula in your worksheet, so you need to open your worksheet. So here you can see the graphic of that worksheet, and you need to type uh, something just like your number. Okay, so here we can find the total number of that particular student. Okay, so here you need to just type this all information. Okay, so in your worksheet, so here we have the roll number, name, and the four subjects: science, English, math and computer. Okay, so here are the number. Okay, so here we just want to get the total number of all this subject. Okay, so to get the all total and the sum of all these number, so we just need to select on that particular cell. Okay, by clicking on that particular cell, we just select the cell and we put the equal sign. Okay, so after put the equal sign, we just need to select all the cell which we want to add in this section. Okay, so here we are clicking on that particular cell. So here we get the cell address of that particular cell, which is C2. Okay, तो अगर हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस साइन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड. यू जस्ट नीड टू पुट द प्लस साइन. फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट करनी है नेक्स्ट सेल. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, अगेन आपको बाकी के दो और करने हैं तो प्लस साइन यूज करना पड़ेगा. फिर आपको वापस क्लिक करना है इस पे. ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन करना पड़ेगा. ओके, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, जो मैथ्स वाली सेल थी इसको सेलेक्ट किया, देन यू नीड टू प्रेस द एंटर. Okay, so after pressing the enter, you can get the sum of all these number. Okay, so ये इन सब का जो सम आया वो टोटल कहाँ गया है इसमें. ठीक है, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा था, कैसे लगाया था हमने फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं. ओके, सो ये आपका फॉर्मूला था यहाँ पे. ठीक है, सो एक तो मैं आपको बता देता हूँ एक अलग से मेथड. ठीक है, सो हाउ यू कैन गेट द ऑल टोटल. ठीक है, सो अगर आपने सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाया था इस सेल के अंदर, ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फॉर तो अप्लाइंग फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार यू जस्ट नीड टू प्रेस द इक्वल साइन. ओके, आपने यहाँ पे साइन को प्रेस किया, फिर क्या करना है आपको, इस सेल का एड्रेस लिखना है. सेल का एड्रेस क्या था यहाँ पे, C2. तो नाउ वी जस्ट पुट द C2. Okay, then press again we want to add this 95. So 95 is the cell address is D2. Okay, so we put the D2. Again we just need to put the D2. Okay, so again we just need to put the plus sign. और फिर उसके बाद हमको किसको करना है, कंप्यूटर के 99 मार्क्स को ऐड करना है. तो वो कौन से सेल में है,
E2 के अंदर, तो हियर E2। ओके, फिर वापस करना है हमको मैथ्स का, तो मैथ्स वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे है, मैथ्स वाला है आपका F2 में, तो F and 2। okay, so now pressing and the enter button, okay, so here you can get the again the total of these all column. Okay, so this is how you can get the apply formula or get the all sum of these columns number. Okay, so now next is what, let us now take a look at the different element of the formula. Okay, so हम लोग और अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पता करेंगे. So mathematical operators such as a plus, minus, divide, multiplication, and this sign is known as a power sign. Okay, so this is how you can apply the power. जो हम लोग पावर जो हम लोग बाय रिटर्न में हम लोग जो उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है. सो अगर हमको कंप्यूटर में अगर पावर लगाना है तो वी नीड टू पुट दैट साइन. ओके, और ये साइन आपका कहाँ पे होगा, ये साइन आपके जो कीबोर्ड में जो 6 नंबर का जो बटन है, ठीक है, 6 नंबर्स के बटन के ऊपर देखो आपको ये साइन मिल जाएगा. ठीक है, so with the help of shift key you can put that sign. Now values like 55 or 5.6, which is our numeric. Okay, so all the numeric sign values we known as a this, and the j as a text. ठीक है, so numeric में आपको क्या होगा, सारे numbers आएंगे, whether it is complete number or a fraction number. Okay, and the text के अंदर आपका क्या होगा, text में आपका होगा आपका अल्फाबेट का ग्रुप्स. ओके, जस्ट लाइक योर नेम और एनीथिंग. सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस सच एज A1, just like your cell address. Okay, BB4, so it's a cell range, or you can known as a A2 colon and A90. Okay, so this is how you can get the cell range and cell. So now function like our sum and averages. Okay, so what is the mean of functions? So here predefined formula is known as a functions. Okay, so here you can see your formulas. Okay, so all other functions are here. ओके, इंसर्ट फंक्शन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऑटो सम यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, सो फंक्शंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी फॉर्मूलाज जो प्री डिफाइन एक्सेल में है, दिस ऑल आर नोन एज अ फंक्शंस. ओके, तो सम करने के लिए हमको सम करके एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं. एवरेज यूज करने के लिए एवरेज फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शंस इसने पहले से ही प्री डिफाइन करे हुए हैं. ठीक है, सो वी डोंट नीड टू द पुट द ऑल फॉर्मूलाज बाय आवर ओन, वी जस्ट कैन apply the functions for the getting these results for the sum, average, subtract and division also. Okay, so now talking about the parenthesis, what is the mean of parenthesis? So to control the order of the procedure, precedence, sorry. So what is the mean of parenthesis? So ये जो आप लोग ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है, just like this. Okay, so these are bracket known as a parenthesis. ये क्या करते हैं आपका, ये आपके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को प्रेसिडेंस ऑर्डर इसका डिफाइन करते हैं कि पहले क्या होने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या किस तरीके से करते हैं. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्मूला मैनुअली, यू कैन ईदर टाइप इन द सेल एड्रेस, ओके, और यू कैन point to them on the worksheet. Okay, so it is easier to use the pointing method, okay, to provide the cell address for the formula. Okay, so I explain you by the pointing method. Okay, and also we did the apply the formula by the typing method. Okay, so I am recommend you to apply your formula by the pointing method. ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, जैसे मैं वापस आपको बता देता हूँ, प्लस साइन अप्लाई करना है. प्लस साइन के अप्लाई करने के बाद में बस पॉइंट करना है जिस भी सेल को आपको ऐड करना है, इस पे क्लिक किया, देन यू नीड टू जस्ट पुट द प्लस साइन. ओके, फिर जस्ट सपोज करो आपको मैथ्स को इंक्लूड करना है, अगर आपको ये दोनों को नहीं करना तो आप इनको स्किप कर सकते हो. ठीक है, और आपको मैथ्स को करना है तो मैथ्स पे क्लिक किया, देन यू जस्ट नीड टू पुट द एंटर बटन. ओके, सो एंटर प्रेस करते ही देखिए साइंस और मैथ्स का सम आ गया यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर्मूला बाय द पॉइंटिंग मेथड. Okay, so now next, so here we have the arithmetic operations. For the doing the calculation in MX Excel, you need to use the arithmetic operator. The arithmetic operations shown in the table below, you can use the used in an
Excel formulas. Okay, so here you can see the brackets which is known as a parenthesis. Okay, ये क्या करता है आपका, आपके प्रीसीडिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है, ठीक है। सो अगर जस्ट सपोज करो ये एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 + 7। ओके, सो फर्स्ट क्या करेगा, ये पहले ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेगा। ओके, एडिंग द 1 एंड 7 इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट। ओके, देन ये क्या करेगा, आपका क्लिक मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो ऐड करने पे आया आपका 8, और 8 को अब क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो आंसर विल बी द 8 × 3 24। ओके, अगर पावर आपको पुट करना है तो पावर आपको पुट करने के लिए ये साइन लगाना पड़ेगा, मैंने बताया आपको। जो भी आपके कीबोर्ड में 6 नंबर का जो बटन है, 6 नंबर वाला जो बटन है, उसको आप लोग शिफ्ट से अगर प्रेस करोगे तो आपको ये पावर वाला साइन मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन। सो विद द हेल्प ऑफ द स्टार बटन यू कैन गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज, एंड द डिवाइड साइन आपको मिल जाएगा जस्ट उसके पास में, स्टार के जिस पास में आपको डिवाइड साइन मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में एडिशन आपको डायरेक्ट आपको पता चल ही जाएगा कि एडिशन का कौन सा बटन है। ओके, एंड द सब्ट्रैक्ट आल्सो, बाय दिस ऑल यू कैन अप्लाई द दिस calculation. Okay, so now we will see the next part, the operator precedence. Okay, so कौन सा सबसे पहले काम आएगा, कौन सा वर्क पहले होता है, तो जो ऑपरेटर का जो प्रेसिडिंग ऑर्डर होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। so when you have more than one operator in the one formula, then you have to follow the rule which tell you the order in which you should do the calculation. Okay, so you should follow the order shown as below. Okay, so first में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन पावर सॉल्व होती है, और फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में होगा आपका एडिशन सब्ट्रैक्ट। ओके, तो जो प्रोसीडिंग ऑर्डर होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर उसके अंदर कहीं पावर है तो सबसे पहले पावर सॉल्व होगी, फिर उसके बाद में अगर कहीं उस पूरी इक्वेशन के अंदर जैसे सपोज करो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होता है, और फिर उसके बाद में होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये कुछ ऐसा है अगर आप लोग जानते हो बोर्ड मास के रूल को। सो मैथ्स के अंदर आप लोगों ने मेरे हिसाब से बोर्ड मास का एक रूल पढ़ा होगा, BODMAS। ओके, सो बी फॉर ब्रैकेट, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। Okay, so this is the board mass. So B mean bracket, O mean of, and D for division, M for multiplication, then addition and the subtract. So by this method we can solve the all expression. ओके, मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन कैसे हो सकती है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 2 × 3 एंड मल्टीप्लीकेशन, फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ आपको 1 + 7 here plus 5 minus 10. Okay, so here you can see the equation, mixed equation. Okay, so in this equation, if you want to solve this equation, then you need to follow these ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व करना है आपको। तो अगर कोई ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 7 सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में सॉल्व कर रहे हैं देन पावर। ओके, सो उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पावर को सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 3 और ओके, फिर उसके बाद में आप लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्ट, तो फिर बाद में एडिशन को सॉल्व करेंगे देन सब्ट्रैक्ट को। ओके, so here we have some example, so I'll explain these example. The 4 multiplied by 3 and plus 2. So here we have two operator which is multiplication and addition. Okay, so पहले क्या करेंगे आप लोग, इसमें ना ही पावर है ना ही ब्रैकेट है, तो आप लोग क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंग ऑर्डर होता है वो पहले होता है एज कंपेयर टू एडिशन। ओके, सो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो फिर वहां पे क्या है आपका 12। Okay, so 3 multiplied by 12 and we get the 2 and the total result will be 14. Okay, so now we next example we have
ब्रैकेट। सो अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का प्रेसीडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन है वो सारी चीजें सॉल्व करनी है, भले ही वो एडिशन हो, चाहे भले ही वो मल्टीप्लिकेशन हो, भले ही वो कोई भी ऑपरेटर हो, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में क्या है आपके 3 + 2। ओके, सो ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 है ये। तो 3 + 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 मीन 5 आएगा, तो 5 आ गया और ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देन वी नीड टू सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन साइन विच इज मल्टीप्लाई बाय द 4। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 4 करा हमने, देन वी गेट द रिजल्ट एज अ 20। ओके, this one. So now again we have divide sign, multiplication sign, then subtract sign. Okay, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको with the help of this board mass rule we need to solve this division sign। तो सबसे पहले क्या किया है, 4 divided by 2 किया। 4 divided by 2 करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में 2 आएगा, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया और सेम एज इट इज एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, हम करेंगे सॉल्व दिस इक्वेशन ओनली। ओके, so 2 multiply by 3, so 2 multiply by 3, so here we get the 6 and the at last we need to solve this equation 6 minus 5। Okay, so we get the result as a 1। Okay, एक एग्जांपल और है लास्ट, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हियर वी हैव 3 × 2 देन प्लस एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग पावर को। तो 3 की पावर 2 सॉल्व किया तो हमने हमको मिलता है 9। ओके, सो 3 पावर 2 मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स मीन अ 9। एंड हियर वी हैव ऑल्सो वन ऑपरेटर डिवाइड। ओके, तो ये भी क्या होगा, इसके जस्ट बाद में सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, एक साथ दोनों को सॉल्व कर लिया है अलग अलग सेक्शन में। ओके, क्या किया है, 4 divided by 2, so it's so here we get the 2, okay, as a result। and at that moment we have only one operator which is प्लस। ओके, सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करेंगे। सो हियर वी एट द लास्ट वी गेट द 11 as a addition of 9 and 2। ओके, so here you have get the some information about your MS Excel। Okay, so how you can enter the formula and how you can solve the formula by your own method। Okay, so I think it's enough for now। So in next section you will get the all information about the remaining part of this chapter। So in next video we will learn about the what is the mean of cell reference। Okay, so here we have multiple cell reference, okay, which is relative cell reference, absolute cell reference, and etc. Okay, so till then watch this video again, and if you have any doubt and any query, so you can ask me by message। Okay, so do practice at your home with the computer। So till then, stay happy and stay safe and subscribe this channel। So goodbye।